हम सभी मनुष्य आत्माओं के पिता निराकार शिव परमात्मा की सानिध्य में आयोजित इस दोपहर के डायलॉग सेशन में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ज्ञान के प्रकाश से हम जन जीवन उजियार करें, ज्ञान के प्रकाश से हम जन जीवन उजियार करें, भय के भवसागर से सबको इस पार से उस पार करें। चलो प्रभु पिता का स्वप्न जो स्वर्णिम भारत बनाना है, इस विश्व को स्वर्णिम बनाना है, उसको हम सब मिलकर के साकार करें और आप सभी का हम स्वागत बारंबार करें, स्वागत बारंबार करें, स्वागत बारंबार करें। अभी मैं मंच को सुशोभित करने हेतु इस कार्यक्रम में आए हुए महानुभाव मुख्य वक्ताओं को आमंत्रित करती हूँ कि आप आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस कार्यक्रम के जो कीनोट स्पीकर है ब्रदर वाई बापजी, आप सेक्रेटरी जनरल नेशनल काउंसिल PRSR हैदराबाद से पधारे हैं। आप आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस कार्यक्रम की जो चेयरपर्सन है सिस्टर BK सरला आनंद जी, आप भी आएंगे। आप कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग है, आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप हैदराबाद से पधारे हैं। डॉक्टर P वेणुगोपाल रेड्डी जी, चेयरपर्सन PRSI हैदराबाद, आप भी आएंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे और आप सब करतल ध्वनि से हमारे महान वक्ताओं का स्वागत करेंगे। डॉक्टर S सुजाता, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट JNMC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ICMR हैदराबाद। ब्रदर रविंद्रन, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट PRCI सोलापुर से पधारे हुए। आप सभी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे हमारे महान वक्ताओं का। ब्रदर चरणजीत सिंह जी, प्रेसिडेंट पोर्ट PR चंडीगढ़ से आप पधारे हैं। ब्रदर कुलदीप सिंह बांगर जी, आप भी आएंगे, अपना स्वागत करेंगे। ब्रदर वरदा प्रसन्न दास जी, एडिशनल डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा भुवनेश्वर से आप पधारे हैं। सिस्टर अनीता जी, आप हम सभी को मेडिटेशन कराएंगे और कोऑर्डिनेटर मीडिया भी इंदौर से आए हैं। आप सभी करतल ध्वनि से हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजाकर हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे। अभी मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ, ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि आप आकर के हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे। साफा शॉल, बुके और बैजेस पहनाकर, और आप सभी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। ब्रदर चरणजीत सिंह जी, आप चंडीगढ़ से पधारे हैं। वरदा प्रसन्न दास जी, एक्स एडिशनल डायरेक्टर INPR गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा भुवनेश्वर। अनीता बहन जी, सिस्टर सरला आनंद जी, साफा भी पहनाया जाए, बैच।
के ऊपर न बैठिए, ऐसा भी चलेगा। जिम्मेवारी और करुणा का व्यवसाय। आजकल वास्तव में देखा जाए तो मीडिया सेक्टर में बहुत पॉपुलर टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, पब्लिक रिलेशंस। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे कारपोरेट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट, सभी जगह पे एक डिपार्टमेंट होता ही है पब्लिक रिलेशंस। तो इस पब्लिक रिलेशन जो पहले जमाने में जब मीडिया का शुरुआत हुई थी, वो समय था कि लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए यूज होता था मीडिया सेक्टर। लेकिन कुछ समय के बाद में वो जो मिशन था अवेयरनेस लाने का, वो आज प्रोफेशन बन गया है, व्यवसाय बन गया है। लेकिन इस व्यवसाय होते हुए भी हम कैसे जिम्मेवारी, कंपैशन इसके क्षेत्र में बताने के लिए हम सभी के बीच में बहुत इस पब्लिक रिलेशन के कार्य में महान वक्तागण है। इसमें बहुत सारी उन्होंने कार्य किए हुए हैं। ऐसे सबसे पहले कीनोट स्पीच देंगे हम सभी के बीच में ब्रदर वाई बापजी बैठे हुए हैं। आप हैदराबाद से पधारे हैं। आपका बायोडाटा बहुत ही 3 पेज का है, तो मैं इतना तो बताते हुए केवल बताना चाहती हूँ, क्योंकि महानुभाव बहुत इस कार्य में, पब्लिक सेक्टर के कार्य में आपने बहुत कुछ कारोबार किए हुए हैं। वाई बापजी is presently Secretary General of Public Relations Society of India. He is also the legal advisor to Public Relations Society of India. He was National Vice President of PRSI and Chairman of Hyderabad chapter in the past. Harbour National Vice President, Admin and Global Forum for Public Relation. बहुत सारा बायोडाटा है आपका। वर्तमान समय आप सेक्रेटरी जनरल नेशनल काउंसिल PRSI हैदराबाद से बना रहे हैं। आप इस विषय में अपनी चिंतन की धाराओं से हम सभी को अवगत कराएंगे। वाई बाप जी, आप वहां पर बैठकर, वहां पर माइक पे, यहाँ पर भी आ सकते हैं। Thank you, sister, for the nice introduction. Chairperson of the present dialogue session, Sister V.K. Sarala Anand. She is the national coordinator, as everybody is aware, national coordinator of media wing of Raja Yoga Education Research Foundation here, and she is also president, national president of Global Public Relations Forum. And guests of honor, they are also speakers. My friend Mr. Ravindran is from NTPC. Brother Varada Prasannadas, Additional Director, retired INPR Department, Bhubaneswar, is from Odisha. And my friend Dr. Venugopal Reddy, Chairman of Hyderabad Chapter of Public Relations Society of India, is a PRO of a big open university, that is Dr. B.R. Ambedkar Open University in Hyderabad. Brother C.J. Singh, my friend for several decades, he is President and CEO of Core PR from Chandigarh. Brother Kuldeep Singh Banga, he is DPRO, District Public Relations Officer from Panipat, Haryana. Sister Sujata, Sujata, and of the dais, Chairman Emeritus, Public Relations Council of India, Sri Jairam, and Mr. Jitendra Bhargava,
Air India, and Mr. T. Vinay Kumar, the current National President of Public Relations Council of India, and the sister coordinator of this session, B.K. Vidya of Media Wing of RERF, and B.K. Anita of Media Wing of RERF, Indore, Madhya Pradesh, and Arati, Sister Arati, member of Press Council of India, and several, Mr. Ramchandra, PRO of University in Hyderabad, and several other dignitaries. We are here for a dialogue on the topic public relations, a profession of concern and compassion. It is inbuilt into the National Media Conference 2022 with the theme Solution-Based Media Towards Prosperous Bharat. Now the topic, public relations, is it a profession of concern and compassion? Yes. Public, this word has come from the Greek word publicus. It means of the people, about the people. And it relates to human beings who are adults. Public is as against private. It is always public affairs, not private affairs. And it deals with always with the group of people, a community and a society. And coming to the relations, relations is about bonding. It is about connections, public connections, not private connections. It is about concerns and emotional bonds and of interactions. And pure in simple, if we look at the characteristics of public relations, it is an art of getting the things done, not by hook or crook. It is always by fair means. It is also said to be an art and a science of maintaining relations. You know, this is an art. An art can be improved upon each time you perform. Therefore, this is an art of maintaining public relations. Public relations is also called as the science of public relations, maintaining relations. You know the nature of science. The science indicates precision. Each time you give the same inputs, the result will be same every time. That is the nature of science. Therefore, public relations is called an art and science of maintaining relations. And public relations, I am talking about the characteristics of public relations. It is an effective motivation and two-way communication. It motivates, it persuades people, the targeted people, the specified people, always the concerned people, not the general public. The people connected with the government, policies or programs, are the people connected with the organization. Specifically targeted people, this is maintenance. And then achieving identity, achieving image, and achieving reputation. Of whom? Not the self, not the PR practitioners, but of the organization for which the public relations practitioners work. And public relations simply stripped to its originality. It is performance and recognition. PR stands for performance and recognition. If you perform, you will definitely be recognized. It is not dancing attendance. Dancing attendance is different from performing and seeking recognition. And technically, public relations is a management function. What is management function? It is involved in planning and executing the things. Public relations is involved at that level. It is a specialized management function. Means expertise is involved in the practice of public relations. Therefore, it is a specialized management function. And then it is a strategic management function. We always adopt certain strategies in implementing the aims and objectives of the organization because the PR goals are in consonance with the overall objectives, goals, vision, mission, aims and objectives of the organization. Then this is a unique
management function. It is unique because it is distinct. Unlike other professions, it is unique because it has a specific qualification to be acquired, and it has to be practiced in consonance with the objectives of the organization. And it is managing information and communication. You know what is information? Information is generally said to be static. When it is moved from one place to the other, it becomes a communication. Information is available everywhere. It can be in the book, it can be in a device, it can be in the library, it can be even in your mind. But to that extent, it is information only when it is moved, disseminated, given from one place to the other, transmitted, then it becomes communication. Therefore, public relations deals with information, managing information and communication. Now look at a few, very few, 2 or 3 definitions given to the public relations. According to British Institute of Public Relations, it is called Chartered Institute of Public Relations, the definition given to public relations profession is, it's a deliberate, planned and sustained efforts to establish and maintain mutual understanding between the organization and its publics. Deliberate, sustained, planned effort to establish and to maintain continuously. Maintain meaningful relations between the organization and the public concerned. Similarly, Public Relations Society of America, they have given a definition of public relations. It is strategic communication process that builds mutually beneficial relationship between organizations and their bodies, similar to the definition given by British Institute of Public Relations. Now come to India. It's a daily application of common sense, common courtesy, common etiquette and common decency, because this public relations is inbuilt into the culture of public relations, into the culture of India. So therefore, it is a daily application of common sense, common courtesy, common decency and common etiquette. We know if anybody visits us, we will inquire about their welfare, about their family, about their children, about their health. We offer them some water, make them sit comfortably, and we express our concern for the guests. That itself is public relations according to our Indian understandings. Now, PR, what to do with government? PR with the government, we know the state has transformed from laissez-faire state. Laissez-faire means non-interference. The government till 100 years, till recently, 100 years ago, up to 100 years ago, the situation was laissez-faire. Laissez-faire does mean non-interference or minimum interference. And then the state has transformed from that state to police state. Police state means it protects the people from the external threats. And then slowly the concept of welfare came in. So there started the profession of public relations. Now the situation has transformed from public be damned to public be informed. Necessarily, government will be informing targeted people about the plans, programs, schemes, policies, freebies, whatnot, everything. So from the situation of public be damned to the public be informed, this is the situation. At this point of time, public relations is much sought after profession. Now, public relations for the government or for any organization is the mouthpiece and antenna. Mouthpiece is for dissemination of information. Antenna is to gather the information, that is feeding the information forward and gathering the feedback. And PR is all for development news, not the rumors, not the grapevine, not any hoax. It is meant only for the dissemination of development news.
Now the question is, the first question of the dialogue session is it a profession of concern? What is concern? Concern for the organization, because a public relations practitioner is always works with an organization, be it government or a public sector undertaking or a private establishment or a business house or an industrial establishment. He works for an organization, and every organization will have its own targeted people or public. They are called concerned public. Now the concern of a public relations practitioner, one on the other side for the organization, the interests of the organization. On the other side, the welfare of the public connected to that organization. This is the concern. Now let us list out the concerns, PR concerns. Persuasion and motivation. Public relations will not impose anything, just like advertising. So now you know the meaning of advertising. Advertise means to draw attention, that's all. You draw the attention, give them whatever you want. No ethics, no morals, no values involved in that. But in public relations, it is always based on truth. It is always based on facts. There is no scope for public relations to utter anything other than truth and facts. Therefore, it is with persuasion and motivation, the message that has to be conveyed to the public, targeted public, will be conveyed. What for? To achieve the objectives of the organization for which the PR practitioner is working. Then this is called consent engineering. The other name for public relations practice is called consent engineering, and also human engineering. While the media practices social engineering, society as a whole, public relations is meant for consent engineering, and consent will lead to public opinion, and that opinion, public opinion, is the foundation for any democracy. Therefore, it is not social engineering. Social engineering is left for media people, but human engineering is done by the public relations professionals. And we have also, public relations practitioners have concern for citizen journalism, because you cannot neglect. In the morning session, Director General of IAMC was telling that 99% of the news come from social media sources only. The mainstream has gone. You know, the mainstream legacy communication, mainstream media, traditional media is called print and electronic, that is radio and television. Now we are living in an era of information revolution, and it is the concern of the public relations practitioners to watch for what is good and what is not, what is true and what is fake, and you are the watchman of information. And information pollution. This is the concern of public relations practitioners. Information environment is being polluted by two major pollutants. One is misinformation and the other one is disinformation. Misinformation is unintentional, because we get something, we forward it to somebody without knowing what it is, without verifying the authenticity, without verifying the source. That is called misinformation. But disinformation is dangerous one, because you do it with some mens rea, with some intention to cause some damage, to cause some chaos, to cause some misunderstanding. So these two are the pollutants of information environment, and public relations practitioner will have to have a major concern to watch for this, and then see that only the right kind of information reaches the targeted public. That PR concern is other thing. It's a profession of morals, ethics, and values. 2 more minutes, because 7 minutes for a keynote address is insufficient. I thought that there will be an arrangement for PowerPoint presentation so that I could conclude it within the time. But now it is open. I will go beyond 7 minutes, 2 minutes, just 2 minutes. So PR concerns. PR is a profession, as I told you, it is a profession of ethics, morals, and values. Ethics, what is ethics? It is a set of principles, behavior, philosophy with honesty, loyalty, integrity, responsibility, and social responses.
unlike others, PR is more concerned about ethics, morals, and values. And what are the other concerns? The other areas of PR concerns is when it is the question of crisis. You know what is crisis? Crisis can be any disorder, can be a disruption, can be a disturbance or a calamity. These crises are of two kinds. One is man-made and the other one is natural. The man-made can be a fire, can be a road accident, vehicular accident, can be a strike, can be a financial crisis or even a war. But when you come to the natural calamities, crises, it is floods, cyclones, earthquakes, droughts, and even diseases like corona. In all these things, public relations practitioners are a must for giving out, for disseminating the correct information to the public so that there won't be any chaos in the communities. And the second question is it a profession of compassion? Yes, compassion. I'll give you an example of CSR. CSR is an exercise of compassion. What is compassion? CSR, corporate social responsibility. Corporate is a legal personality, just like a group of people put together and given a name registered. It is called a corporate organization. It is a juristic person, a legal personality. And social responsibility is giving back to the society. Whatever a corporate organization takes from the society will be given back in a different form. The sun is the best example of corporate social responsibility. You know how clouds are formed, how rain occurs. The sun, because of its heat, it absorbs moisture from every source, from the tank, from the lake, from river, rivulet, stream, and even a drain, and even from our body, overhead tanks, everywhere it absorbs moisture and then forms clouds and give it back wherever it is necessary. So corporate social responsibility, thus the organizations do ethical business. So public relations practitioner is in charge of corporate social responsibility exercises. Similarly, the corporate organization will give back to the society. You remember, you just recall any major organization, they will have a corporate social responsibility activities. There are several activities which I need not tell you. So these are the two things which public relations will basically have, and this is very apt topic for discussion. Sarala sister has fixed this topic for this organization, very befitting, and it's a framework, because public relations framework being ethics, morals and values, concern for organizational goals we have, for public concern for public perceptions, and concern for unpolluted information, and concern for media relations, and concern for citizen journalism. And the compassion part of it, compassion for public good, compassion for sympathetic and empathetic activities of the organization. In 2008, Brother Karunabai, chairman of this media conference, and Sister Sarala, in association with the PR legend Dr. Narasimha Reddy, late Narasimha Reddy, they have formed an organization called Global Forum for Public Relations with one task that is called Golden Triangle. Golden Triangle means professionalism, ethics and spirituality. People have mistaken. Spirituality means maybe like a religious thing associated with Brahmakumaris and all that. But spirituality has nothing to do with any other religion. Spirituality is having faith in God and having compassion towards the other living beings, not only human beings. So with this, I conclude my keynote. Thank you very much, Sarala sister. Thank you, Brahma Kumaris. हम सभी के बीच में बहन सरला त्रिपाठी जी भी पधारे हैं। आप सेक्रेटरी ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, आप आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आरती त्रिपाठी जी, मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि हमारी आरती बहन का स्वागत करेंगे, बैज बुके देकर सम्मानित करेंगे।
कर ध्वनि से बहन आरती त्रिपाठी जी का स्वागत करेंगे। आप सेक्रेटरी ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया मेंबर। अभी हमारे अगले वक्ता हैं डॉक्टर पिया एंड इसके पहले आप ऑथर थे। ऑथर वर्क एज अ सीनियर जर्नलिस्ट फॉर एनाडू न्यूज़पेपर व्हिच इज वन ऑफ द एस्टीम्ड तेलुगु डेलीज आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आप आएंगे और अपनी चिंतन की धाराओं से हमें अवगत कराएंगे। जयराम जी, श्री विनय जी, BS Rao garu, ERO Geetam University, Jitendra ji, and Shantan bhai also here. I think Brother Shantan. Once again, good afternoon, one and all. It's a really good opportunity for me for being with you, and I am going to present some facts about societal information and peer conceptual system. If I were to spend my last dollar, I would spend it on public relations, said Bill Gates. He is the founder of Microsoft. That seems that how the PR will affect to the society. In fact, public relations has emerged as a key component of any human activity in the day of instant communication. Communication should be instant. Nowadays, everyone knows how it will be affect in the society. PR played a significant role in the two remarkable achievements after independence. That is, one, India emerged as the world's largest vibrant democracy, and India has been transformed into global economic player to become a world's third biggest economy. These two are the most effective achievements after independence, and it is because of the following some facts I am going to reveal. That is, over 2.5 lakh PR professionals in India, they are practicing. Over 30 lakh extension communicators, about 1,10,000 newspapers, registered newspapers as per RNI, about 850 TV channels, which is daily telecasting various news and entertainment items, about 450 radio stations, including mainstream radio and FM stations in India, over 71 lakh internet connections, and over 115 crore cellular subscribers in India out of 140 crores of population. Just imagine how it is becoming most effective. Over 52 crore social media users with about a dozen popular social media platforms in India actively. Over 1.55 lakh post offices and around 4 lakhs 14,000 employees working in postal department. These are all the biggest communication network in India. We can blast any news in a positive manner, in particular purpose, if you use the tools, PR platforms in a proper way. Brother already told that misinformation and disinformation. If what will happen, if it is a disinformation in different way or negative information in a different way, it will affect on the society in a negative aspect. Everyone, being a communicator, we should aware of it, where you are throwing, what you are throwing to the society. We should conscious about while forwarding the news to the social media platforms. And also the following are the trends and predictions of the public relations in the decade, PR 2.0, that is convergence of traditional PR with internet and social media, already we are discussing. Adoption of artificial intelligence to reach larger sections of the people. PR education to equip people to the PR profession. In India, 4 major are offered to the UG level courses, like PR courses are in different universities. As per the UGC, recognized universities are running the courses at UG and PG level. That is journalism, public relations, advertising, and mass communications. Based on the nomenclature,
as per the UGC norms. The universities are coining here and there, but these are the four major nomenclatures in India. Peer is one of the growing professional. Most of the conventional universities and ODL, open distance learning, also in India offering multi-cushion all-in-one communication and journalism courses, in which out of 8 courses public relations are in one of them. Dr. B.R. Ambedkar Open University, Hyderabad, where I am working as a public relations officer. For example, in the open and distance learning system offers BA, Public Relations and Journalism, and also at PG level, Public Relations, Mass Communication, Journalism and Mass Communications includes the part of subject that is Public Relations we are offering in our university. And training is desirable to all the state government established mass communication and peer academics for training peer professionals and various organizations. Peer research and innovation. Peer research and innovation time to time is very important tool and aspect nowadays. Exercise enhance the image of peer profession and help the projecting new theories of the peer practitioners, which is coming and evolving the society day to day. And the last one is peer finds a place in decision making process if new techniques, appropriate education, periodical training, research and innovations are made integral. When we integrated all these 6, the peer profession effectively works for that organization. The gross enrollment ratio, GR, everyone talking about GR in India, gross enrollment ratio in India into higher education was 26.3 in the year 2019 and 20, while in advancing countries it was more than 60%, where we are. In advancing countries, more than 60% GR, but in India it is around 26.3 only. And the world average ratio is 38 point. It's alarming time. World average ratio is also more than India GR ratio. And we were below the average. The new education policy, NEP 2020, NEP 2020, adopted by India, aimed to increase the GR at least 50% by 2035. At least 50% by 2035 means it is another 13 to 14 years. At least we have to reach a GR ratio of 50% by 2035. The policy suggests abolition of affiliation system imposed by our country by British legacy. Even though we are following British legacy system only in India, but this NEP 2020 is trying to abolish the system. And this is to achieve by granting autonomy to the thousands of colleges for awarding degrees. However, the institutions should undergo for the NAAC accreditation, National Assessment and Accreditation Council, which every institution should undergo for the NAAC accreditation. Then they will get the autonomous to award the degrees at their level. Credit system is a part of new policy. Credits, we are calling at UG level every course, 2 credit course, 3 credit course, 5 credit course, whatever it is. But 40 credit course comes under the UG level. Wherever you go and join, whichever the university, whether it is in Kashmir or Kanyakumari, wherever it is, you can go there, opt the subject, complete that particular course, then get the credits. That is called CBCS system, choice-based credit system. Your credits will be deposited in a bank, like your account in various banks. When you are going to deposit some amount, you can transfer that amount to different accounts. Like student can have a ABC system, academic bank of credit system. Student can deposit their credits in his own account. He will approach the particular university, wherever it is, whichever the university. For example, I told you 40 credits is in a UG level. A student can complete 21 or 20 credits from particular university, 20 other credits from different universities, but he can approach the particular university where he has completed 20 credits. There he will get the UG certificate. This is the new system is coming up. It will comes under NEP 2020. Definitely, India will reach GR more than 50% by 2035 or below before 2035. Credit system is a part of new policy where a student can opt to studying whatever the course he or she is interested in, and it provides a facility to transfer credit from one institution to other institutions under ABC. Already I was explained that.
academic bank of credit, which is going to be a game changer by providing freedom to the students for gaining knowledge. Freedom for students. You no need to impose to study something or study somewhere. This is the wonderful opportunity for students, and teachers and universities should encourage them. This policy emphasis, among others, the Indian system of yogas. This is very important, madam. Sarla madam, kindly attention here. The policy emphasizes, among others, an Indian system of yogas. It is known to the world that this Muhammad organization, that is the Brahma Kumaris World Spiritual Organization, is promoting Raja Yoga meditation more than 100 years or 85 years, more than 85 years. This Raja Yoga meditation can be brought under the credit system of NEP 2020, what we are discussing just now, so that UGC recognized universities in India will look towards BKS. No need to BKS to reach someone. All the universities will follow the BKS only. If this can be done in a year or two, not less than 10 lakh students may join this accredited 2-grade courses of Raja Yoga meditation. I believe this could be one of the humble suggestions by this session, and Brahma Kumaris organization will consider it. And already yesterday we have discussed with Sarla's sister, credit system, credit transfer system, and NEP also. Whatever is possible by the Brahma Kumaris, all the PR professionals, PR fraternity friends are here, they will help you. Kindly adopt those system, whichever is helpful to the BKS as well as society. You already, brother Babji sir told that no intention from BKS intention to develop the society. Thank you very much. Om Shanti. MSc और डिप्लोमा कोर्सेज बनाए जा रहे, डेवलप किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत पब्लिक रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन, MBA के अंदर बहुत सुंदर रीति से बताया जाता है। अभी हमारे अगले वक्ता है डॉक्टर एस सुजाता जी। आप प्रोजेक्ट कंसल्टेंट JNMC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ICMR हैदराबाद से पधारे हैं। मंच पर आसीन अध्यक्ष सरला बहन जी, keynote speaker Tata Babji garu, National Council PRSI Hyderabad chapter, और गेस्ट ऑफ ऑनर्स, आज के गेस्ट ऑफ ऑनर्स है डॉक्टर पी वेणुगोपाल रेड्डी गारू, चेयरमैन PRSI हैदराबाद चैप्टर, ब्रदर रविंद्रन, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट PRCS सोलापुर, ब्रदर चरणजीत सिंह, प्रेसिडेंट कोर्ट ऑफ चंडीगढ़, ब्रदर Varada Prasanna Das, ex-additional director INPR Government of Odisha, Bhubaneswar, brother Kuldeep Singh Bangar, DPRO Panipat, sister BK Anita, coordinator Meeraving, and my brothers and sisters of the dais. जी, मैं हिंदी में बोलना चाहती हूँ। हिंदी में मेरा प्रस्तुति करना चाहती हूँ। तो ये मेरा रहा ये पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशन कंसर्न कंपैशन। तो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ पब्लिक रिलेशंस ए प्रोफेशन ऑफ कंसर्न एंड कंपैशन। मैं अपनी प्रस्तुति करने के पहले पूरे ब्रह्मा कुमारी आयोजकों को तहे दिल से नमन करती हूँ। मन और शरीर के बीच गहरा संबंध है। जब आप अपने स्वयं के व्यक्तिगत विकास पर काम कर रहे हो, तो वह आवश्यक है कि आप अपनी शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं और मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं दोनों को पूरा करें। जब स्वास्थ्य और कल्याण की बात आती है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब हम शारीरिक रूप से ठीक नहीं होते हैं, तो यह हमें भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है, और जब हम मानसिक रूप से ठीक नहीं होते हैं, तो यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मैं क्षमा चाहती हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर मैडम त्रिपाठी का नाम नहीं लिया है, या RJ त्रिपाठी जी का, सॉरी मैडम, मुझे अभी याद आया। वे सभी सीधे आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, और इसका विपरीत भी। पोषण मस्तिष्क को प्रभावित करता है।
मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह अधिक विशेष रूप से अवसाद दर्द प्रबंधन को प्रभावित करता है। जनसंपर्क करुणा परोपकारिता के समान नहीं है, हालांकि अवधारणाएं संबंधित है। दलाई लामा ने कहा, महिलाओं में करुणा ज्यादा होता है। एक शो से पता चला है कि जब हम करुणा महसूस करते हैं तो हमारे हृदय गति धीमी हो जाती है। हम बॉन्डिंग हार्मोन ऑक्सीजनेटर का स्राव करते हैं और मस्तिष्क क्षेत्र सहानुभूति, देखभाल और आनंद की भावनाओं से जुड़े होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर हमारी इच्छा होती है अन्य लोगों के लिए दृष्टिकोण और देखभाल। हम सभी ने कोविड-19 पहली दूसरी लहर के बारे में जो देखा है वह भारत में लाखों लोगों के जीवन और काम को तबाह करने वाली तबाही से कम नहीं है। एक और हमारी कामकाजी आबादी में से कई लोगों की जीवन भर की बचत को छीन लिया। दूसरी ओर इसने उनके कई कमाने वाले परिवार और सशक्त रूप से पहुंचना। सबसे महत्वपूर्ण चीजों से एक कार्यबल के मुद्दों को पहले से कहीं अधिक धैर्यपूर्वक और सहानुभूति के साथ सुनना है। महामारी की मानसिकता में लगभग हर कर्मचारी किसी न किसी तरह के जबरदस्त तनाव से गुजर रहा है, चाहे वह स्कूल के बच्चा हो या संगठन के कर्मचारी। आप अपने वियोक्तियों से अपने आने वाले चिंता ना करें और घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। जैसे बड़े आश्वस्त करने वाले शब्द और कथन बड़े कार्यबल के लिए अत्यधिक प्रेरक हो सकते हैं, जिन्हें उन्हें प्रबंधन करना है। यह एक SMS, ट्वीट, ईमेल या उस मामले के लिए एक समाचार पत्र हो सकता है जो संगठन से आता है, जो अपने कर्मचारियों के लिए सहानुभूति, समर्थन और करुणा का संचार करता है। संगठन के भीतर सद्भावना के निर्माण में अद्भुत काम करता है। संकट परिस्थितियों में जनसंपर्क। हर संभावित संकट का अनुमान लगाएं और पूछें क्या होगा अगर। घबराए बिना हर संभावित घटना के लिए एक संकट प्रबंधन और संचार टीम को व्यवस्थित करें और फिर संचार करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाएं और मीडिया और सभी हितधारकों को संदेश को नियंत्रित करने की स्थिति में रहे। सभी संभावित स्थितियों के लिए कई मामलों में मीडिया वितरण के लिए एक समाचार विज्ञप्ति पहले से ही तैयार की जानी चाहिए। कितने सारे हम यानी कि कदम लेने से संकट परिस्थितियों से हम जो जूझ रहे हैं जनसंपर्क अधिकारी ये पूरा बाहर कर सकते हैं। काल्पनिक प्रश्नों और सतह प्रश्नों को विनम्रता से दूर किया जाना चाहिए। प्रवक्ता को प्रशिक्षित करने और याद दिलाने की जरूरत है कि उनसे पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जानने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन कभी कभी ऐसे जानकारी को ना छुपाए जिसका खुलासा किया जाना चाहिए। कभी भी झूठ ना बोले और या मीडिया या जनता को गलत सूचना देकर धोखा न दे। ये पूरी समस्याएं एक पूरे जनसंपर्क अधिकारी को के जानकारी में रहना चाहिए। कॉलिन पावल ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके तथ्यों को बाहर निकालना सबसे अच्छा है, भले ही नए तथ्य पुराने के विपरीत हो। कोई समस्या हो तो अस्वीकार हो। किसी भी संकट की स्थिति में कोई कंपनी, संगठन, संस्था या व्यक्ति जितनी तेजी से वह संचार का प्रबंधन करने में सक्षम होगी और अपने संदेश पर विश्वास करेगी, यह उससे भी बेहतर घटना और संकट को बंद कर देगी। हमेशा याद रखें कि मीडिया सभी स्तरों पर कर्मचारियों को सहित किसी को भी आवाज के लिए खोजेगा, इसलिए व्यक्ति विश्वसनीय हो। इसका मतलब चिकना या पॉलिश लगवाना नहीं है। वह ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जिस पर जनता सच बोलने के लिए भरोसा करे। मीडिया के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है अफवाहें फैल की तरह यानी कि आग की तरह फैल जाएगी, इसलिए अफवाहों को रोके और गलत सूचना को सही करें। पीड़ितों और उनके परिवारों और दोस्तों के लिए
करुणा, सहानुभूति, जुनून और पछतावा दिखाना कानून के खिलाफ नहीं है। सहानुभूति या देखभाल विश्वसनीयता यानी ट्रस्टवर्दी का प्रमुख घटक है और विश्वसनीयता स्थापित करना किसी भी संचार का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। यदि आपके दर्शक आपको एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में नहीं देखते हैं तो आप अपना संदेश लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे या लोगों की चिंताओं को दूर करने में सक्षम नहीं होंगे। संपर्क अधिकारी का जिम्मेदारी बनती है कि संकट के दौरान जनता और विरोधी जो कह रहे हैं उसे सुनना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वे और मीडिया समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। याद रखें कि आप जितना कम कहेंगे उतना ही कोई दूसरा आपकी बात को याद रखा जाएगा। रिश्ते आपके बैंक खाते की तरह होते हैं। आपको उस खाते में नियमित रूप से पैसा डालना होगा और कभी कभार ही निकासी करनी होगी। यदि आप अपने किसी पत्रकार से एहसान मांगते हैं तो आपको रिश्तों से बाहर निकलने से ज्यादा उसे रिश्ते में लाना होगा। इसका मतलब यह है कि रिश्तों को बनाए रखना और किसी संपर्क के साथ घूमना जब आपको किसी चीज की आवश्यकता ना हो। ब्रह्मचारी संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन में मुझे इनवाइट करने के बहुत आभारी हूँ। विशेष रूप से सिस्टर सरला जी का। इस संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले अनेक कार्यक्रमों दिल की भाषा, प्यार की भाषा, जिसमें कोई रिलीजन, कास्ट सम्मिलित नहीं होते हैं। विश्व भर में लार्जेस्ट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो 140 लगभग 140 रजिस्टर्ड सेंटर्स है जो 20 विंग्स में यानी कि 20 विंग्स में बनी हुई अलग अलग फील्ड के लोगों सेवा कर रहे हैं, जिसमें शांति, होलिस्टिक एजुकेशन, सकारात्मक से भरपूर जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है। एक अलग सा स्पिरिचुअल डायमेंशन दिया जा रहा है। टू हैव ए बेटर लाइफ, ब्रह्म कुमारी मीरा विंग RERF की सहयोग से स्वर्णिम भारत बनाने के लिए तैयार है। सतयोगी भारत बनाने तथा विश्व गुरु बनाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। ओम शांति। धन्यवाद डॉक्टर एस सुजाता जी, आपने बहुत सुंदर रीति से हम सभी को बताया। वास्तव में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में कंपैशन, कंसर्न, परवाह करना ये गुण नेचुरल है। मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं। किसी कवि ने कहा है, वेयर द लाइफ इज लॉस्ट इन लिविंग, वेयर द विजडम इज लॉस्ट इन नॉलेज एंड वेयर द नॉलेज इज लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को हमें कन्वे करना है, मैसेज देना है, जो भी है वो बताना है, लेकिन अगर हम विजडम के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ अगर हम बताते हैं, कंपैशन, कंसर्न, कुछ वैल्यूज को साथ में लेके, तो इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचेगी, लेकिन इन गुणों के साथ पहुंचेगी तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी हमारे अगले वक्ता है ब्रदर रविंद्रन जी। रविंद्रन ब्रदर जी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट PRCI सोलापुर से पधारे हैं। आपका बायोडाटा बहुत लंबा है। मैं केवल प्रेजेंटली जो है नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ PRCI, अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स, वहां से आप पधारे हैं। आप अपना वक्तव्य देंगे। आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन देना है। समय की सीमा होने के कारण सीमित समय के अंदर अपना वक्तव्य अपने चिंतन की धाराओं से अवगत कराएंगे। ब्रदर रविंद्रन जी। Good afternoon, respected chairperson, Sister B.K. Sarla Anand, our keynote speaker for today, Brother Y. Ms. Barji, our guests of honor, Dr. P. Venugopal Reddy, Dr. S. Sujata, Brother Charanjit Singh,
Brother Bharada Prasad Das, Brother Kuldeep Singh Bangar, Sister Anita, RTG, my dear friend Mr. Jairam from PRCI, Mr. Vinay Kumar, our National President from PRCI, Mr. Bhargava, my roommate while at this location. See, that is my concern towards him. Thank you. Okay, in fact, I also wanted to make a short presentation, but unfortunately, the technicalities doesn't permit us, and perhaps even the time is also there. So I will quickly go through what I have jotted down. So dear brothers and sisters, over the last 2 years or so, our entire system of communication virtually changed. I'm sure you all agree with that. It's basically due to the onset of the pandemic. 2 years back, we never imagined to have webinars or work from home concepts, and we were all practicing that for the past 2 years. In fact, face-to-face person communication seems to have largely taken over, and I'm sure in the future we are not going to get back to that. Friends, during the pandemic, we have seen that even when we see a person face to face, the face mask present a literal barrier between people, making it very difficult for us to read facial expressions and gauge how others are virtually feeling. The face mask has really put us away. Please remember, dear friends, the values of compassion, kindness, love, and humanity are the ones that will see through difficult times. Keep this thing in mind. You need to be more compassionate in the days to come. Nowadays, we have seen also the businesses, they have weekly Zoom meetings where they discuss something that is positive that has happened during the last week, and I'm sure our friends who have gathered here, we need to encourage people to share good news in their personal lives too. In fact, a friend of mine who was a TV journalist started a program called Achhi Khabar, which some of you must have seen in the website, and this program has really picked up. She picks up very good stories which talks about good things, nothing bad, nothing critical. But what I've seen, this type of stories has really picked up and people have started appreciating that. And now coming to my topic, which is public relations, a profession of concern and compassion. So that is the Lakshman Rekha given to me. So I would, as far as possible, try to stick to that. But before that, I would like some audience also to participate. I would like to know from any one of you, what do you mean by concern? You can just raise your hands. If you are not able to raise your hands, I will move on with my next point. Yes, Mr. Bhargava is smiling. I have concern for you. Yes, okay. Okay, then what is an example of compassion? There is a concern for time. Yes, as a speaker, I am also concerned for the audience. Okay, I will skip that. I will now talk about what is compassion and vis-a-vis empathy. Basically, to understand the difference. Empathy and compassion stems from the same desire to better relate, understanding others' experiences. Both are very, very beneficial to individuals as well as to the companies. For leadership, understanding the difference and choosing your approach deliberately, I would say, is very, very critical. Then what is empathy? The term empathy is used to describe a wide range of experiences. In fact,
The emotion researchers generally define empathy as the ability to sense other people's emotions coupled with the ability to imagine what someone else might be thinking or feeling about you. For example, giving your people full attention in the meetings, like for today's meeting we are having, being curious about their lives and interests, and offering constructive feedback are all empathetic behaviors. Then why is empathy important? Well, this is the new question. Empathy is very, very important because it helps us to understand how others are feeling, as we can respond to their feelings appropriately to the situation. Now the question comes, the importance of practicing compassion as well as empathy in our day-to-day life. For a leader, both empathetic leadership and compassionate leadership are very, very crucial. These have proven effects on the employee happiness, retention, as well as the overall well-being. As a leader, you will want to use all these parameters effectively. Now the question to all of you, how does one become a compassionate leader? The good news is that you can train and improve both empathy as well as compassion. For compassion, the change starts within. It starts with yourself. As we further develop our ability to help others, we become more compassionate. Through practice, you can become a better boss, a better co-worker, and a better person. Now coming to the subject, PR people need to implement a culture of empathy. This is what I'm going to talk to you. I would highlight only 3 points. One is empathy improves communication with others. Empathy is the most important communication skill a person can have at work or at home. So having empathy in the PR industry would mean that you are able to understand your clients effectively, and even their consumers are going through. This is the after effect if you are able to get hold of empathy in practice. For example, if your potential client does get a very bad reputation due to a campaign or an advertisement that has not gone well, they might sit over it or brood over it and they don't do anything about it. But if you as a PR person knows the utilization, the power of empathy, and you as a communication specialist would be able to understand what the brand has gone through and assist the agency to overtone those critical issues. Additionally, if you are able to convince your agency or the client that the aspect went wrong because of the following parameters, then I'm sure other agencies also will come to you and you will explore more business. Empathy also allows you to see both sides of a story. What I mean by that is PR professionals are specialists when it comes to communication. And in order to be a great communicator, they need to be very, very objective and transparent. For example, you can't be biased when it comes to writing a press release or a social media post for clients or when they're talking at a press conference. By having empathy and being very, very objective and having transparency, you'll be able to tell better. Empathy also improves PR strategies. My friend Mr. Charanjit Singh will definitely talk about that because he is also part of an advertising agency and is the MD of that. When it comes to PR, empathy matters a lot. Only by better understanding individuals, we will be able to understand how we communicate. Empathy isn't only required for effective public relations. It's an essential part of it. It's happened to vast majority of the companies. They have not practiced this and they have failed. Take the case of Coca-Cola. So people who are in the advertising industry will be able to know this. Coca-Cola
fell into this problem way back in 2004 when they launched the C2, a drink that fell somewhere between normal and Diet Coke. It was a huge, huge flop as there was no USP or market demand. Overall, this blunder cost the company $50 million, and that exemplifies the need for fully understanding your audience before launching your product. In fact, you will be happy to know this is what some of the advertising professionals always talk about in the advertising fraternity, that if you're always looking for launching a product, you must go to Kerala. Because that is the state where once you launch a product, you will get the maximum number of criticisms and the maximum number of feedback. So if you're an advertising guy, if you have a product to be launched, always remember it is Kerala, and Mr. Vinay Kumar is also here. He will help you to launch the product as well. So how can you be more empathetic is the key question. Its key is to actively listen and develop a genuine interest in the affairs of others. When pitching your stories, services, you must always give feedback. You all must have heard of Procter & Gamble as a company. The baby care product, the Pampers, the grooming kit, the Gillette, Mr. Babji should start using it. Gillette, personal health care products, safety pins, Vicks, yes, Vicks is also a product. See, most of the people can relate to motherhood, I'm sure. All of you will agree to that. Whether it's through the personal experience or thinking about your own mother. Procter & Gamble cleverly turned this relatability into empathy when they started a campaign called Thank You Mom. This is way back, must be 10 or 15 years back. The campaign was basically depicting the struggles that come along with parenthood. The ad, which was released in time, as I told you, it was during the 2012 London Olympics. This shows mothers in different locations and the difficulties in raising young athletes. By evoking, what I'm trying to tell you is, by evoking empathy for the moms, viewers were enabled to truly invest and connect to the story, and because of that, the advertising was a big resounding success. The tagline, remember, B&G, proud sponsors of mom. This was used to tie up in all the elements of the campaign, and it was a tremendous success. So, by having empathy, PR professionals are able to think like their client and understand the brand's voice, objectives, and image. This makes your communication efforts a lot meaningful. So I'm still expecting a buzz from Madam. She's not done that, so I'm continuing for the next 1.5 minutes. Please show some compassion towards me as well. Okay? So, by showing a little more compassion, friends, our world will be a happier place for all of us. When compassion exists in personal and professional relationships, almost everything is going to be easier and more comfortable to achieve, including problem solving and conflict resolution. When our actions are consistent with our words, compassion can be achieved and arises from our interdependence with others to achieve outcomes and values. Finally, brothers and sisters, I was truly concerned about your patience and time, so I end my short talk with a feeling of concern, with a feeling of compassion, and with a feeling of caring. Thank you very much. थैंक यू ब्रदर रविंद्र जी, आपका लेक्चर
जब हम सुन रहे थे तो मेरे सामने उदाहरण आ रहा था हमारे भारत के माजी राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पूरा उदाहरण आपका सुनते हुए सामने वही इमेज आ रहा था, उनके टीम के साथ, उनके सबऑर्डिनेट के साथ, उनके कलीग के साथ उनका कैसा रिलेशन था और कैसे वो आगे बढ़ते गए। तो ये जिम्मेवारी और करुणा, एम्पैथी, ये बहुत अच्छा आपने बताया। अभी हमारे अगले वक्ता है, केवल 2 मिनट के लिए वो बात करेंगे, उनको जाने आरती त्रिपाठी जी। बहन आरती त्रिपाठी जी आएंगे और अपना वक्तव्य। ओम शांति। मंचासीन उपस्थित अतिथिगण, भाई वाई बाब जी, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर P वेणुगोपाल रेड्डी भाई जी, बहन डॉक्टर S सुजाता जी, भाई रविंद्रन जी, भाई चरणजीत सिंह जी, भाई वरादा प्रसन्ना दास जी, भाई कुलदीप सिंह बांगर जी, और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारी चेयरपर्सन BK सरना आनंद दीदी जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ आके अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं आज पिछले 25 वर्षों से यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आ रही हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तब, मेरी एज अप्रॉक्स 36 है, तो मैं काफ़ी बचपन से यहाँ आ रही हूँ। और आप सब जो PR के दिग्गज हैं उनके सामने अगर मैं कुछ PR के बारे में कहूँ तो मैं बहुत छोटी हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने स्टैट्स में डेफिनेशन के साथ सब कुछ क्लियर कर दिया है कॉन्सेप्ट को। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जनसंपर्क का जिम्मेदारी और करुणा के साथ जितना अच्छा कार्य हमारी ब्रह्मा कुमारीज बहनों ने आज तक किया है, इतना अच्छा एग्जाम्पल और कहीं नहीं हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। कि घर घर जाकर हर एक के अंदर हमारे परमपिता ब्रह्मा, परमपिता शिव जी के लिए जो जागृति, उनसे कनेक्शन के लिए मोटिवेट करना, उनके बीच में जनसंपर्क स्थापित करके उनको जागृत करना कि कैसे उन्हें प्रभु के लिए अर्पित होना है, खुद को अर्पण करना है और सारे समाज के बीच अपने आप को एक अलग जगह बनानी है खुद के लिए। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा एक एग्जाम्पल नहीं होगा। हमारी जो ब्रह्मा कुमारी बहनें जनसंपर्क का क्या कार्य कर रही हैं ऑल ओवर इंडिया और उसके बाहर अन्य देशों में भी। और इसी के साथ एक्चुअली आज दिन में थोड़ा सा हैक्टिक हो गया। सुबह से हमारे एसोसिएशन के कई प्रदेशों के सब जो सदस्य हैं वो आए हुए हैं, तो उनके साथ सुबह से ही स्वागत कार्यक्रम चल रहा था, जिसकी वजह से अभी मुझे थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा था। तो मैंने दीदी से चाहा भी था मुझे पहले थोड़ा सा फ्री कर दें अगर, तो मैं मेडिसिन लेके आराम कर सकूं। और साथ ही BK करुणा भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया कि मैं अपनी बात आपके समक्ष रख सकूं। सामने उपस्थित सभी अतिथिगणों का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू आरती बहन जी। आपको सौगात और ये देंगे कि उनको जनपोर्ट दिया चंडीगढ़। आपका भी बायोडाटा बहुत लंबा है, मैं केवल इंट्रोडक्शन बताना चाहती हूँ। चरणजीत सिंह जी। ओम शांति। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप, क्योंकि आफ्टर लंच जो सेशन होता है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, सबको नींद आ रही होती है। आप में से मुझे बताएंगे कि कितने लोग मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रेस में हैं, जैसे प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन। प्रिंट से हैं आप? वेरी नाइस। बाकी के कुछ पब्लिक रिलेशन से हैं क्या, या किसी का पब्लिक रिलेशन से इंटरेस्ट है? वेरी नाइस। So distinguished speakers on the dais and off the dais. Because मैं पहले मीडिया वालों से पूछना चाहूँगा कि आप इस सेशन में, पब्लिक रिलेशंस के सेशंस में क्यों आए? कोई बताना चाहेगा? जी। कुछ नया क्या चल रहा है वर्ल्ड में पब्लिक रिलेशन, एज अ पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में। लेकिन पब्लिक रिलेशन के बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, और आप क्या सोचते हैं उसके बारे में कि ये क्या चीज़ है? जैन इरिगेशन जो इंटरनेशनल कंपनी है कृषि की, वहाँ गत 22 साल से PRO करके मैं काम कर रहा हूँ। और चलिए, आप तो PR से हैं, वेरी गुड।
आप देखिए मीडिया से जो है, खास करके जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। जी जनसंपर्क की आवश्यकता सब किसी को है, मीडिया को भी है, NGOs को भी है, स्पिरिचुअल सोर्सेस को भी है। लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होगा तो आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। दिस हैज बीन टेकन अप। आई थिंक थोड़ा सा हट के आई वुड लाइक टू स्पीक सिंस वी आर हियर फॉर सॉल्यूशन बेस्ड मीडिया which we have been talking since morning. And public relation is one tool. जैसे बाप जी ने कहा कि ये एक मैनेजमेंट डिसिप्लिन है, it's a management function, yes. But this is the one tool which not only changes the lives of an organization, the existence of an organization, but has also the power to change you. जो हम चेंज की बात कर रहे हैं सुबह से, दिस इज व्हाट द PR टूल इज, क्योंकि पब्लिक रिलेशंस को एक्चुअली बड़े डिफरेंट नजरिए से देखा गया है. दैट इज व्हाई आई आस्क्ड माय मीडिया फ्रेंड्स व्हाट डू दे थिंक, बिकॉज आई आल्सो ग्रेजुएटेड, आई स्टार्टेड माय करियर एज ए जर्नलिस्ट एंड मूव्ड ऑन टू PR, एंड दैट्स ट्रांजिशन वाज scoffed at by many of my friends. ये क्या कर रहे हो, जर्नलिस्ट होते हुए आप PR में दूसरी तरफ जा रहे हो. एंड एट ए टाइम, आई एम टॉकिंग ऑफ 1980s, when nobody had heard of public relation कि ये करते क्या है, और many a times मेरे घर वालों को भी नहीं पता कि मैं करता क्या हूँ. और जब पहली बार मैं जर्नलिज्म से हरियाणा पब्लिक रिलेशंस में आया, कुलदीप जी यहाँ पे बैठे हैं, और सबसे पहले मेरी ड्यूटी, हालांकि मुझे एडिटोरियल असाइनमेंट दी गई थी कि आई वाज पुट एज एन असिस्टेंट एडिटर ऑफ ए मैगजीन व्हिच दे वांटेड टू स्टार्ट, द हरियाणा पब्लिक रिलेशंस, ए इंग्लिश मैगजीन व्हिच दे वर स्टार्टिंग, एंड आई वाज अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट एडिटर. बट एज द टाइम ग्रू, वो जैसे जैसे देखा कि ये लिख रहे हैं, ठीक लिख रहे हैं, तो CM साहब ने बुला के हमें PR की असाइनमेंट्स देनी शुरू कर दी कि मीडिया जर्नलिस्ट को प्रेस पार्टीज को लेके जाइए, उनको ब्रीफ कीजिए. एंड दैट वाज द काइंड ऑफ ए बिगनिंग. एंड वन ऑफ द थिंग वाज के कुरुक्षेत्र में मेरी ड्यूटी लगा दी गई कि एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल हम करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स को हरियाणा के अंदर प्रमोट करने के लिए, और आप वहां पे जाके रेकी करके आइए कि वहां पे मीडिया को लेके जाना है आपने पार्टी को, तो वहां पे देख के आइए कि क्या इंतजाम. तो मैं पब्लिक ऑफिशियल गाड़ी में पहुंचे वहां पे कुरुक्षेत्र में, और वहां से पूछने लगे, क्योंकि ऑफिस का कोई एड्रेस नहीं था. उन्होंने एक अंदाजे से बताया था कि ये पब्लिक रिलेशन का ऑफिस आपको मिल जाएगा. तो जैसे जैसे पूछा, कभी किसी से, कभी रिक्शे वाले से, किसी रेडी वाले से, कभी के जी को लोक संपर्क पब्लिक रिलेशंस का कोई डिपार्टमेंट का यहाँ पे दफ्तर है, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल नहीं थे, रिमेम्बर दैट, एंड लैंडलाइंस भी बहुत किसी किसी के पास हुआ करती थी. तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक वो ढोल टमाके करके वो एक नगाड़े बजा के चलते फिरते होते हैं, सरकारी अनाउंसमेंट करते हुए, उनका एक विभाग है कहीं पे, तो वहां जाके आप पता कीजिए. तो दैट वाज द परसेप्शन एट दैट टाइम कि व्हाट दे डू. एंड लेटर ऑन एज आई मूव्ड इनटू द PR, एंड आई फाउंड कि इट हैज many connotations. We have been called the spin doctors. We have been called the firefighters. We have been called the PER. And that has been the kind of considerations. But definitely, as I've grown and I have found that the kind of power this PR is, and I have been able to successfully implement that and create a change whichever organization I have worked with, whether it was a government organization, whether it was an NGO, whether it is a sporting organizations, because public relation is nothing but as Babji said, science and art of managing communication. और communication क्या है? ये जब से ये जो ये युग बना है, एडम एंड ईव, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन. हमारी सिविलाइजेशन की ग्रोथ इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन.
Nothing happens without communication. And what we do is managing effective communication so that it can bring the change which we want to see in the world. और एक खूबी और भी है, हम केयर एंड कंसर्न की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पब्लिक रिलेशन का तो ये ब्लड में है. हमारे ऋषि मुनि ये पब्लिक रिलेशन एज ए प्रोफेशन अभी 90s में हमने इसको देखा है. 19th century, you can say not the 20th, yeah, it was 19th century when it started out, that the people starting it and giving it the name of, from publicity, propaganda to public relations, it has evolved over that period. But हमारे देश के अंदर तो ये युगों युगों से चलता आ रहा है. अगर आप देखें तो अर्थशास्त्र 3000 साल पहले, it's a compendium of PR as to how a government or how a king should operate, how he should behave, how he should take care of its different organization or his country. So there are n number of examples. Mahatma Gandhi, Guru Gobind Singh, I would call him as a marketing communicator par excellence. So, but the way we have learned it, that public relations, public of course, as Bhavji explained, it's a very specific term which defines एक organization किन लोगों के साथ communicate करती है. And the other aspect is the relations. हमारे हिंदी के अंदर somehow it has become distorted. हमने इसको लोक संचार, जन संचार, लोक संपर्क विभाग ये कहना शुरू कर दिया है, which does not explain what exactly it is. Public relation is लोक संबंध. आप relationship build कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं relationship? आपका घर में किसी के साथ relationship है तो उसके basis क्या हैं? Can you be dishonest? अपने घर में रिलेशनशिप में अगर आप वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है अपने फ्रेंड फैमिली के अंदर, कैन यू बी डिसऑनेस्ट? द बेसिस ऑफ एनी रिलेशनशिप, here in the corporate sector we talk of organizations building relationship with different groups of people, but what we take is we take advantage of so many shortcuts, and we do not think about what kind of relationship which we are building. Is it trustworthy? Is it truth? Is it based on truth, honesty, truth, transparency, and the trust? जब वो है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कभी भी कहीं पे भी डिसऑनेस्ट होके अगर वो काम करता है तो इट कैनॉट सस्टेन इटसेल्फ. इट कैनॉट, that is why that the public relations is not only the media relations, it is not customer relations, it is much more than that. It covers, the public relations covers every aspect of human activity, and that care and concern and compassions are inbuilt into any relationship if we want to create of an organization with any groups of people, and that's the beauty of it. And the another aspect of it is, because since morning we are talking of the change which we want to bring about, and I'll conclude with that because I'll not take much of your time. रिलेशनशिप बिल्डिंग या ये जो फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन है, जो मैनेजमेंट है, इट स्टार्ट्स विद अवर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. आज आप किसी इवेंट के बारे में रिपोर्टिंग करना चाहते हो तो एक माइंड में पिक्चर लेके जाते हो कि ये तो वाकई कोई खून हो गया तो ये बंदा वाकई क्रिमिनल ही होगा, राइट? So you have preconceived notions, you have preconceived opinion about people, you have preconceived ideas कि जिससे आप
मिलने जा रहे हो या जो चीज आप इवेंट को देखने जा रहे हो और उसकी रिपोर्टिंग करने जा रहे हो, that must be there is a negativity about that. So that picture is created in our mind. And everybody was, since morning we are talking of changing our perspective, changing our attitude, changing our thoughts to bring about this change. और ये change होता कैसे है? There is another aspect of it. And which Sister Shivani also said in the morning session, and if you have attended the yoga session, कि आपकी जो learning है, when the child is in the womb, your learning starts from there. The kind of thoughts which a mother has, the kind of communication she is having with other people and interaction she is having, the kind of music she is listening to, everything is getting embedded in our subconscious. Or when we grow up, our thoughts are being created with the use of words. Remember that. No thought comes on its own. अगर आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हो तो वो गलत सोचने के लिए आपको कुछ वर्ड्स चाहिए. Everything begins with those words. Those thoughts start from those words. And that is the reason कि जब हम गलत सोचेंगे, वो सोच नहीं है, हम गलत यूज कर रहे हैं words. So it is possible. There is a science called neuro-linguistic programming. That's also a part of communication. And in communication also, in advertising and PR, we use those NLP techniques. But what is exactly you need to understand is that you can program your mind if you want to change this world. If you want to change your world, you just need to change your words. The way you think. You need to create a new vocabulary for yourself, the vocabulary of positive words. मैं छोटे बच्चों को कई बार ये एक्सरसाइज देता हूँ कि अपने टीचर के बारे में बताओ 5 चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं उसके बारे में. And it is very difficult for anybody. You can do it in the corporate sector when we are training somebody. Okay, tell 5 things about your boss, or 5 things about the 5 good things about your organization. What is good about it? And I tell you that many a times the people cannot think positive words more than 2 or 3 at the max. Even 5 words they cannot think about positively about somebody, because we have been trained, we have been pushed into those no's and don'ts and can'ts, और हमारे वो जो संगल डाल दिए गए हैं उन भाषाओं के use of words से. All we need to do is change your vocabulary, and that is the beginning, and that is what even बहुत से लोग आज अखिल सेशन में नहीं थे जब गुंजन उत्रेजा ने कहा कि सिर्फ आप अपनी हेडलाइंस चेंज करके देखिए. वो हेडलाइंस क्या है? वर्ड्स हैं. क्या उसमें आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज कर सकते हैं? और जब आप एक हेडलाइन चेंज करते हो तो आपकी स्टोरी का जो बेसिस है, जो उसका नैरेटिव है, वो ही चेंज हो जाएगा. सो अनफॉर्चुनेटली दिस इज a choice which we have to make in communicating with ourselves. If we want to bring in the change, let us start changing that vocabulary which we have been using right from our childhood. Knowingly and unknowingly, हमारे parents, हमारे teachers, everybody had been telling us something or the other, good and bad about others, right? कि वो बंदा ठीक नहीं है, वो religion ठीक नहीं है, उसका पहरावा ठीक नहीं है. So we start creating a picture in our minds. So those words need to be changed consciously. You have to become conscious of that, and that is what meditation is all about. And that is how the care, concern and empathy which we are looking at into the world, it lies within us. Just change your word and your world will change. Thank you so much. थैंक यू चरणजीत सिंह भाई जी. अभी हमारे अगले वक्ता हैं ब्रदर वरदा प्रसन्ना दास, एग्जीक्यूटिव. Respected chairman and dignitaries on the desk and audience and my brothers and sisters.
today, the greatness has proved of this organization by inviting the both professions of publication like PRSI, PRCI and Press Council and other professionals organizations. In the one panel we have united, I am very happy that I am able to see by all professionals of different states and national levels. The job of the public relations of state government, of central government and of corporate, it varies. It is not similar, but the topic is same and there is a different speakers. So naturally there will be a similarity of discussions will be there. First of all, my brother has told the definitions, so I do not want to repeat it. I want to highlight on the PROs and how he is the image builders of his organization. It is neither in state government or central government or a corporate or any organizations. A PRO has to maintain a high ethical and moral standards personally. His conduct reflects the conduct of government, corporations or organizations. He should sincerely consider himself a servant of people. This applies to all government employees, but as the PRO is more exposed to public and media contact, he has to be extra careful in behavior and shall conduct him with poise and dignity. This is the age of communication and information. The role of public relations professionals, be it government or private, plays a vital role in the context of image building. In the absence of those professionals, it is difficult to do so. That is why every company or government organizations, public relations officials are being appointed. Though their job is important in day-to-day affairs, especially at the time of any crisis happening, but after incidents when problems solved and become cool, then everybody forget their contribution. Some are view in the it is a thankless job, but practically their job is very much significant towards creating a good understanding among management and staff, government policies, public awareness, ascertaining reactions of opinion makers, reading and bring it to the notice of the authorities. Maintain good amicable relations with media persons for publishing various issues to bring it to the notice of public. As a result, the image of the organization or authorities become appreciated in societies. They are the real peacemakers, but their services rendered every day in a government department or organizations does not get recognized. As a result, their job status promotion is comparatively less than other officers' professionals. Now the real time has come to unite and fight for their various causes, strengthening public relations councils, societies by mutual understanding, friendly relations as and when required. Public relations officer is the visible and immediate link between the organization, government and various media. It is he who receives the first shock from the media and it is he who communicates the first reaction of the organization, government to the media. The PR officer should be a man of character with respect for truth. He should have progressive attitude, sincerity, unfailing courtesy, a sense of responsibility to the public and be fair in presenting the views of the organization, government which he serves. PRO is the eyes and ears of the government on the concerned organizations. Hence, management of statutory bodies should not hesitate to provide them the status and promotion that justifies the deserves. Thanks for this Brahma Kumar organizations. They have invited all the different professions. In Odisha, I have seen from the Press Council that Ashok Panda is organizing various seminars. Like PRSI, Mr. Amarjit also, I have attended all their meetings. Now I am glad to see all the professionals in one stage, in one platform. Thanks for the organizations and thanks my dignitaries. Thank you, Berda Bisanadas. आदरणीय सरला बहन जी, मंचासीन प्रोफेशनल्स, भाई बाप जी,
वेणुगोपाल जी, रविंद्रन जी, दास जी, चरणजीत जी और हमें बहनें एवं मंच के सामने आप दर्शक के रूप में, ऑडियंस के रूप में बैठे सभी साथियों को इस कार्यक्रम में इतनी देर तक बैठने के लिए, इतने पेशेंस के साथ बैठने के लिए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कुछ चीज़ें मेरे सिर के ऊपर से भी गई यार, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रोचक नहीं है, और जो सब्जेक्ट रोचक नहीं हो वहाँ ऑडियंस का लगातार बैठे रहना अपने आप में एक बहुत हिम्मत का काम है। तो अपने लिए तालियां बजा सकते हैं, आप इतनी देर से हिम्मत करके बैठे हैं। मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र का हूँ। मेरा एक जर्नलिस्ट के नाते भी अनुभव है और अभी PR प्रोफेशनल के रूप में काम कर रहा हूँ। जर्नलिज्म और PR ये कोई अलग अलग हिस्से नहीं है, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म के हिस्से हैं। मैं कहूँगा कि PR जर्नलिस्ट के साथ काम करके उस उद्देश्य की पूर्ति में सहयोगी बन सकता है जिस उद्देश्य के लिए ये मीडिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। मैं परसों शाम को यहाँ पर हम आए थे, चरणजीत जी भी उसी बोगी में थे, मैं भी उसी बोगी में था, तो वी वर अननोन टू ईच अदर। ये नीचे वाली सीट पे ना, मैं ऊपर वाली सीट पर था, तो मैं ऊपर बैठा बैठा आराम से सुन रहा था सबको। हमारे करमचंद जी हैं पंजाब, जो उनके शायद मीडिया का काम उनके पास है, देखते हैं, तो इनसे कुछ डिस्कस कर रहे थे। मुझे लगा कि नहीं, ये भी माउंट आबू जा रहे हैं, चलिए रास्ते में धीरे धीरे परिचय आ जाएगा। जनसंपर्क का विषय मुझे पता नहीं था कि जनसंपर्क पर बोलना है। कई दिन पूर्व मेरी बात शांतनु जी से हुई थी फोन पर, तो बात हुई कि आपका आना फाइनल है। मैं मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिल रहा है, पहली बार यहाँ पर आया हूँ और लग नहीं रहा कि पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ विषय में बोलना है। देखिए, मैं तो बोलने का ज़्यादा आदी नहीं हूँ, मुझे आदत भी नहीं है, मुझे ज़्यादा नहीं बोलना आता। मैं सुनने की मानसिकता से आ रहा हूँ। बोलेंगे आपको कुछ बोलना है, ठीक है जी, हम बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। तो यहाँ आने के बाद जब बुकलेट देखी तो पब्लिक रिलेशंस सब्जेक्ट थोड़ा सा रोचकता से बाहर है, तो मुझे लगा था कि हाँ ऑडियंस कुछ कम ही होगी, लेकिन फिर भी पर्याप्त है। और आप लोग शुरू से आखिर तक बैठे हैं, ये आपकी हिम्मत का काम है। समय की मर्यादा बिल्कुल मेरे ध्यान है। पब्लिक रिलेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके एथिक्स क्या हैं, ये मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत बढ़िया से सबको बताया, बहुत अच्छे से। मैं अपने जो कामकाज के तरीके में चीज़ें अपनाता हूँ, इस मीडिया कॉन्फ्रेंस का जो सब्जेक्ट देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं जो काम करता हूँ इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के जो सब्जेक्ट है उसके बिल्कुल नज़दीक मैं काम करता हूँ। मैं आपसे 2-3 अनुभव शेयर करूँगा। एक PR प्रोफेशनल मीडिया कर्मियों को किस तरह पॉजिटिव रास्ता दिखाने का काम कर सकता है, किस तरह पॉजिटिव आइडियाज दे सकता है, मैं अपने अनुभव से आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। लगभग 3-1 महीने पूर्व की बात है। अब रूटीन है, मेरा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ, तो पत्रकारों का आना जाना रूटीन में मेरे कार्यालय में होता है। दिन भर में 20-25 पत्रकार आते हैं, सबसे जानना, हालचाल जानना। और मेरा स्वभाव में है कि आते जैसे कोई पत्रकार साथी आते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक के, सोशल मीडिया के हैं या यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनसे एक ही बात पूछता हूँ, क्या खोज खबर है शहर की भाई? वो जानकारी देते हैं तुरंत। अब उनके पास जानकारी क्या होती है? उनके पास जानकारी होती है एक्सीडेंट हो गया जी, ओके। उनके पास जानकारी क्या होती है? वो जी वहाँ पे ना डेथ हो गई, ओके। क्या जी कोई व्यवस्था नहीं ट्रैफिक की, पुलिस वाले काम नहीं कर रहे, ओके। मैं अगले क्वेश्चन डाल देता हूँ। 3 क्वेश्चन उनके सुनने के बाद चौथा क्वेश्चन मेरा बनता है, तो आपने क्या किया? मैं क्या कर सकता हूँ? आप तो देवर्षि नारद के वंशज हैं, तो वो कुछ कर सकते हैं।
देवर्षि नारद जिन्होंने पूरे विश्व को एक दिशा दिखाई और उन्होंने तीनों लोकों में संचार, विचारों का संचार करने का काम किया। यहाँ का जो विषय है, यहाँ की जो जानकारी है, समाचार है, वो दूसरे लोग में पहुंचाया, दूसरे लोग का समाचार यहाँ पहुंचाया। आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कि देखो भाई, ऐसा है कि ट्रैफिक रूल सारे बच्चे तोड़ते हैं। बोले जी आज मेरे सामने एक बच्चा जो है ट्रैफिक लाइट तोड़ के चला गया। आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बताऊँ कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हाँ जी बताइए। एक्चुअली वो एक वेबसाइट चलाते हैं, छोटा सा अखबार निकालते हैं, लेकिन साथ साथ वो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। मैंने कहा एक समाज को दिशा देने का काम इसमें आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया कर सकते हो। आपने कभी लाइव होने का काम किया? लाइव करते हो? हाँ जी करता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस ट्रैफिक लाइट पे आपको लगे कि जिस समय कॉलेज स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स ट्रैफिक लाइट तोड़ने की दिशा में बढ़ रहे होते हैं, थोड़ी देर के लिए लाइव आ जाएगा। ये लाइव आके क्या करूँगा? मैं लाइव आके करिए कि देखिए ये बच्चा जिसको ट्रैफिक नियमों की जानकारी नहीं है, ये ट्रैफिक रूल तोड़ रहा है, ये लाइट तोड़ के भाग रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो बदनाम हो जाएगा बच्चा। मैं कहा उसका चेहरा मत दिखाइए, पीठ दिखाइए, उसके व्हीकल का नंबर मत दिखाइए। और साथ में जिस बच्चे को जानने वाले जो वो तो उसको टोक ही देंगे ना। आप एक पॉजिटिव तरीके से उसको समझाइए कि अपने माँ बाप, उनके माँ बापों के लिए मैसेज छोड़िए साथ साथ जब आप लाइव आ रहे हैं कि नहीं माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या आप एक बार चलाओगे, दो बार चलाओगे तो तीसरी बार उनके माँ बाप जरूर टोकेंगे, माँ बाप जरूर पहचान लेंगे कि हमारा बच्चा है, क्योंकि वो तो पहचानते हैं कौन सी शर्ट पहन के गया उसको, वो अपने बच्चों को जरूर पहचानेंगे। पॉजिटिव तरीकों को लेकर के आप चलिए। एक दिन ऐसी बारिश आ रखी थी तो दूसरा साथी का क्या, हाँ भाई क्या खबर, फलां कॉलोनी में है ना जी बस हालत खराब है, जल भरा हुआ है, तो सारा पूरा शहर जल मगन, शहर बना तालाब। बात तो आपकी सही है, लेकिन इसमें से कुछ पॉजिटिव निकालिए। पॉजिटिव इसमें क्या पॉजिटिव होगा जी? शहर में पानी पानी हो गया, पॉजिटिव तो कुछ है ही नहीं। लेकिन इसमें पॉजिटिव ये हो सकता है जिस समय बारिश आ रखी हो, आपको लगता है कि इस शहर का ये हिस्सा थोड़ा निचला क्षेत्र पड़ता है, पानी भरेगा। आप थोड़ी देर लाइव आइए, अपने घर से लाइव आइए, शहर में बहुत तेज बारिश हो रखी है, फलाने एरिया में या फलां सेक्टर में बहुत तेज बारिश है और वहाँ जल भराव की स्थिति बन सकती है। आप सभी शहरवासियों से अनुरोध है कि अगले 1 घंटे तक उस क्षेत्र में ना जाएं। ऐसा करने से आप वहाँ जल भराव के संकट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। देर से जाएंगे तो तब तक जल वहाँ से निकासी हो जाएगी। पॉजिटिव रास्ता दिखा सकते हो, लोग आपके चैनल को देखेंगे। आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, तीसरी बार करोगे, चौथी बार लोगों में मैसेज आएगा नहीं फलां जो पत्रकार है वो बहुत पॉजिटिव तरीके से खबर को दिखाता है। यार उसकी खबर को देखेंगे, बारिश के समय में किस एरिया में बारिश हो रखी है, कहाँ ट्रैफिक ज्यादा है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कि ऐसे करके क्या होगा? ऐसे करके 2 काम होंगे। एक, आपके चैनल की व्यूअरशिप बढ़ेगी। नंबर 2, आप समाज हित में काम करोगे, लोक कल्याण के लिए काम करोगे। और लोक कल्याण के लिए काम करेंगे तो लोग आपको कहेंगे बहुत अच्छा पत्रकार है, तो ये जो रिपोर्टिंग करता है इसका चैनल ये लाइव आया तो कोई बहुत अच्छी जानकारी दे रहा होगा, ये रास्ता अपनाएंगे। तो मेरा इतना ही कहना है कि 2 छोटे अनुभव मेरे बीच में जोड़े हैं। हम PR प्रोफेशनल्स हैं और देवर्षि नारद के वंशज हैं, पत्रकारों से अलग नहीं है। तो हम लोक कल्याण के लिए जो भी अच्छा कर सकते हैं, जो पॉजिटिव रास्ता दिखा सकते हैं पत्रकार साथियों को दिखाते हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जनसंपर्क का काम हम भली भांति कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू कुलदीप सिंह बागल जी, आपने बोला कि जो सोर्स है कंपैशन, एम्पैथी या जो कंसर्न, ये जो हमारे मूल गुण है, पिता परमात्मा सर्व गुणों का सागर है, उनसे जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर ये सारे गुण डेवलप होने लग जाते हैं। तो आइए अभी हम मेडिटेशन करते हैं कुछ समय के लिए। तो मेडिटेशन BK अनीता दीदी जी, आप कोऑर्डिनेटर है मीडिया विंग RRF इंदौर से पढ़ा रहे हैं। हम सभी को पिता परमात्मा से मिलन मनाएंगे, अनुभव कराएंगे पिता परमात्मा
सम्मानीय मंच, सभा में बैठे सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत लंबे समय से 2 घंटे से हम सभी बहुत अच्छी प्रेरणा में बातें सुन रहे हैं। हमारा पब्लिक रिलेशन कैसे होना चाहिए, कैसे सक्सेसफुल होना चाहिए, कैसे उसके अंदर में वैल्यूज होना चाहिए, पॉजिटिविटी होना चाहिए। लेकिन इन सब का आधार जब उस परम सत्ता से हमारा कम्युनिकेशन श्रेष्ठ होगा, सक्सेस होगा, तो आपसी हमारा रिलेशन भी बहुत अच्छा होगा और लोगों के साथ में भी हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होगा। और राजयोग मेडिटेशन वो माध्यम है जिस माध्यम से हम सर्वोच्च सत्ता अपने परमात्मा पिता से हम कनेक्शन जोड़ते हैं। परमात्मा जो सर्व गुणों का, सभी वैल्यूज का, सभी का सागर है, उनसे जब हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है तो ऑटोमेटिक उनके गुण और शक्तियाँ हमारे जीवन में आने लगती हैं। और जैसे जैसे हम मेडिटेशन का अभ्यास बढ़ाते जाते हैं, वो गुण और शक्तियाँ हमारे संस्कारों में भी आने लगती है। कर्म क्षेत्र में भी वो गुण और शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं। तो आइए कुछ पल के लिए हम उस अनुभूति की ओर चलते हैं। राजयोग मेडिटेशन, सबसे पहले इसमें स्वयं की पहचान होना जरूरी है। जो आप सब ने आज सवेरे के सत्र में सुना, हमारी आदरणीय शिवानी दीदी ने बहुत अच्छी तरह से बताया। हम सब कुछ जानते हैं लेकिन स्वयं को ही हम नहीं जानते हैं। तो मैं कौन हूँ, उस आत्मिक स्वरूप को पहचानना जरूरी है, क्योंकि उस आत्मा का ही संबंध परम सत्ता के साथ में है। तो राजयोग मेडिटेशन में सबसे पहले अपनी चेतना को, अपने ध्यान को सब तरफ से हटाकर कुछ पल के लिए हम आवाज की दुनिया से परे शांति की ओर, निर्वाण धाम की ओर हम चलेंगे। ये हमारी एक अंतर जगत की यात्रा है, ये हमारी इनर जर्नी है। तो सभी तैयार हो जाएंगे, अपने स्थान पर सभी अलर्ट होकर के बैठ जाएं और अपनी चेतना को, अपने ध्यान को अपने आप पर केंद्रित कर लें। अनुभव करें, मैं पंच तत्वों के भौतिक शरीर से भिन्न शरीर में ही दोनों भ्रिकुटी के बीच विराजमान एक चमकती हुई ज्योति हूँ, एक चैतन्य सितारा हूँ, एक चेतना। मैं आत्मा इन सर्व कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ, इसके द्वारा कर्म करने वाली मैं चैतन्य सत्ता हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सातों गुणों की मैं आत्मा स्रोत हूँ। मुझे आत्मा में सारे गुण शक्तियाँ समझी हुई हैं। मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर
इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाने के लिए आई हूँ। कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए पाठ बजा रही हूँ। इस शरीर की तरह अनेकों शरीर बदल बदल कर मैं सतयुग से लेकर पाठ बजाती आई। अब मुझे इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ पूरा कर वापिस अपने घर जाना है और नए सिरे से नए संस्कारों के साथ स्वर्णिम दुनिया में पाठ बजाने आना है। मैं आत्मा अभी अपने घर शांति धाम की ओर जा रही हूँ। इस शरीर रूपी वस्त्र से न्यारी होकर मन बुद्धि के द्वारा 5 तत्वों से पार सूर्य चांद तारागणों से पार अंतरिक्ष से भी पार अपने मूल वतन शांति धाम जो मुझे आत्मा का अपना निजी धाम है, अपने निजी धाम में मैं पहुंच गई हूँ। मुझ आत्मा का ये घर बिल्कुल शांति की दुनिया है। कोई आवाज नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई हलचल नहीं, परम शांति। यहाँ सुनहरा लाल प्रकाश छाया है। सभी बुद्धि रूपी नेत्र से देखें, मैं चमकता हुआ सितारा अपनी शांति के देश में हूँ। अपने सर्व गुणों और शक्तियों के साथ मुझ आत्मा के सामने मेरे पिता परम पिता परमात्मा विराजमान है। मेरे पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म किंतु अति शक्तिशाली सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा विराजमान है। मेरे सच्चे सच्चे पिता सर्व गुणों और शक्तियों के सागर हैं। मैं आत्मा बिल्कुल समीप आ गई हूँ। आज दिन तक जिस भगवान परमात्मा को मैं अलग अलग नामों से पुकारती रही, ढूंढती रही, अब मैं आत्मा उस पिता के सामने हूँ, उस पिता के बिल्कुल नजदीक हूँ। उनके शांति सागर की किरणें
पवित्रता के सागर की, आनंद के सागर की, परमात्मा की अनंत शक्तियां किरणों के रूप में मुझे आत्मा के अंदर समाती जाती है। मेरे प्यारे पिता के सानिध्य में मुझे आत्मा की बैटरी चार्ज होती जा रही है। मैं आत्मा एक पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होती जा रही हूँ। मेरे पिता दाता, विधाता, वरदाता मुझे देने ही देने वाले हैं। मैं उनके सानिध्य में हूँ। उस परमात्मा से मुलाकात कर उनकी शक्तियों से भरपूर होकर मैं आत्मा अंदर से सशक्त होती जा रही हूँ। सर्वशक्तिवान पिता के सानिध्य से मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। उनकी किरणों से मुझे आत्मा की चमक, मुझे आत्मा की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। इन्हीं गुणों और शक्तियों से भरपूर होकर परमात्मा मिलन है। मैं आत्मा पुनः सृष्टि रंगमंच की ओर आती है। लाल प्रकाश की दुनिया को छोड़ अपने पिता से वायदा करती हूँ कि मैं सारे दिन में रोज आपके पास आऊंगी, आपसे मिलन मनाकर आपके द्वारा दी हुई शक्तियों को, गुणों को अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी उपयोग करूंगी। इन वायदों के साथ सूर्य, चांद, तारा गुणों को पार करती हुई मैं आत्मा पुनः बिल्कुटी सिंहासन पर विराजमान हो गई। मैं आत्मा आज की इस सुखद नुमा शांति वेला में यही संकल्प लेती हूँ, अपने परमात्मा पिता के घर आकर मैं अपने जीवन में पॉजिटिविटी को बढ़ाऊंगी, सकारात्मकता को बढ़ाऊंगी। जो भी कार्य करूंगी सबके प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हुए समाज में और विश्व में सकारात्मकता फैलाऊंगी। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति।
because the audience are mostly in English, I prefer to communicate in English. At the outset, I offer my high-level respect to the most revered PR personality of the entire universe, the Supreme Almighty Authority, Paramatma, who is the father of the entire humanity. He is a high-level PR personality because PR means communication, and the communication delivered by him is true. The communication given by him is very, very, very useful to live a comfortable and peaceful life for any human being. Therefore, he is a great PR personality. We, the children who are in this profession, who have opted to function in this area, owe our high-level gratefulness to him. In fact, I have in front of me the towering PR personalities like M.B. Jairamji. Bhai Sahab, I'm feeling little uncomfortable. You have to be there and I have to be in front of you. And when I am given this position, since I cannot deny the function given to me, therefore I feel little uncomfortable to speak before you. Jairamji is a high-level PR practitioner, and also I see Jitendra Bhardwajji, Vinay Kumarji, and so many, Raoji from Geetam University, and so many other PR personalities. The very name denotes PR. Hindi is a beautiful language. We can derive the word pyar from it. The profession associated with the bondage of love when you are relating with others. When we are relating with others, this is such a wonderful profession which I deem is divine, because usually people say a medical practitioner, a doctor is deemed as a divine personality to your patient because it's a life and death. In the process, the patient thinks that he is a divine personality because of his profession. But I feel PR profession, those who function in this makes the profession makes that human being who is functioning makes them divine, because in this Brahma Kumari's spiritual organization we are given a beautiful true knowledge, godly knowledge, that God wants to make all of us to be divine, because every human being is latent with the divine qualities. Added to that, God wants all of us to be extraordinary with our qualities which are very, very, very close to the functioning
of public relations profession. There are 16 celestial arts which a human being needs to possess in order to be a high-level divine personality like Krishna, like Narayana, like Lakshmi, the so-called Hindu deities. God says it is possible. It is possible because the human being, when he applies 16 celestial arts, like, which it is very, very close to the PR profession, like the art of learning, art of writing, art of teaching, art of making others one like you, art of making waste to the best, art of being relaxed, art of making friendship easily, and the other one is to perform activity with sweet talking, madhur vani bolna, then art of being, giving inspiration to others, living with hope and giving hope to others. There are 16 celestial arts like this. If all of them are performed and if we imbibe all these arts, we can become a divine personality like Krishna. Therefore, my dear family, PR family members, I know closely for the past so many years or so many decades, while performing their duties, you all have depicted, exhibited and demonstrated all these celestial arts, rather some of them, and made God appreciate you, and you fascinated God. Therefore you are here and you have been able and you have been given a chance to give message to the entire world. So this is entirely the work of God, and all of you have taken the opportunity and you have, in your own way, in the profession, what we need to, you have, all of you, Brother Babji, Brother Reddy, Brother Ravindran, Brother Kuldeep Singh Ji, and Sister Sujata, and my dear Brother Charanjit Singh Ji, they wonderfully given the professional expertise, what they have been practicing. They have given the nectar of the profession to all of us. They shared the nectar. But in fact, when I have been knowing them for the past so many years, I felt this is all because you have chosen to unconsciously practice the godly requirements like these celestial arts. Like the first important potential each one of us as PR people have to carry is pyar. The former chief of Brahma Kumaris, Prakash Mani Dadiji, whom you all know, is the most powerful leader of Brahma Kumaris, who has held more than a decade of administrative unparalleled skills she has demonstrated. She has, she is like any other founders. She may not knowing all the administrative and management studies, but when Brother Karunaji, who was then in 1960s, when Brother Karuna Bhaiji, who is now the chairperson of Brahma Kumaris Media Wing, when he was introduced by some of our brothers to Dadiji is PRO of our organization, and Dadiji, not knowing what the profession is,
and what it really means. She just invited him, saying, "आओ प्यारो," saying, the तरुणा भाई को ऐसा invite किया है, "आओ प्यारो." Pyaro means, she did not know the meaning of pyaro, but she in those days understood the inner meaning of what is pyar, and she addressed him, and that is the care and concern and compassion of God to all of us. And actually all of you have shared the concern what pyar has and what is the level of compassion we need to show in our profession. But what usually God says to all of us is, we need to understand about ourselves and show concern to ourselves and show concern towards us, compassion towards us. Compassion means understanding the latent negativity and then making the waste of the negativity into the best. This is the compassion what the Supreme Almighty desires from all of us. I'm sure you have come here to take showering blessings from that Supreme Almighty authority. I feel that, usually PROs are limited in number. Each organization has only one PRO, and that too they are loaded with lot of activities. Maybe that is the reason why they are not able to accept the invitation of this wonderful organization and come to participate in this conference. I'm sure next time, with all the power what you people have really come and carrying, I'm sure next time we are going doubling and multiplying our numbers. And this is the message and the blessings what we carry from here could really help us to discharge our function in a most effective and in a most efficient, dynamic and magnificent way. This is the experience of this soul which is in front of you. Therefore, I expect all of you to take the benefit like I have received. And I take this opportunity to thank all of you and to greet all of you a high-level success and a high-level life ahead, filled with happiness, peace and prosperity. Thanks once again, and thanking dear Bhakti brother and all the respected dignitaries on the dais, especially Anita Gandhi. You have taken all of us to the world of God, and then we didn't feel like coming down, so thank you very much. Thank you, my dear brothers. You have tremendous mountaineering feature, like you have knowledge in your profession. Therefore, please come again and again and again and take this and make this platform a beautiful platform and for dispensing this communication to others. Thank you. Thank you, my dear sister Vidya. You have conducted this so well. Thank you. Thank you. Thank you, Vedanta sister Sarlanand ji. अभी इंटरैक्टिव सेशन लेना है 5 मिनट में. आप लोगों को कोई क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हो, केवल 5 मिनट में. कि 2 मिनट के मेरी कंसर्न एंड कंपैशन देखा तो एक इंस्टेंस मेरे दिमाग में आया, क्योंकि 6 महीने पहले कनाडा के टोरंटो शहर में हुआ. बहुत बर्फ पड़ी थी, सड़कें बंद थी. एक आदमी 1 मील पैदल चल के बर्फ के अंदर रेस्टोरेंट के सामने पहुंचता है, और जब वो 15 फीट दूर होता है तो बोर्ड पे पड़ता है क्लोज्ड, और वो सीधा अपने नी पे गिरता है. अब क्या होता है कि क्योंकि सीसीटीवी लगा है तो ओनर ने अगले दिन देखा कि एक कस्टमर उनके पास आया था और ये. अब जो पीआर की हम बात करते हैं कि एक इंफॉर्मेशन है, ये आपके पास सीसीटीवी पे क्या है, अब आप क्या करना चाहिए आपको. तो ओनर ने क्या किया, उस क्लिप को इंस्टाग्राम में पोस्ट किया और कहा कि आई एम लुकिंग फॉर दिस पर्सन टू ऑफर हिम अ फ्री मील एट माय रेस्टोरेंट.
तो ये फ्री का बात एक अलग है, क्योंकि फ्री बर्ड और ढूंढने के लिए क्या हुआ कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स, कनाडा के न्यूज़पेपर पे खबर छप गई। तो एक गुड एक्ट डन एंड सिंपल यूज ऑफ कॉमन सेंस। तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक पीआर प्रैक्टिशनर है। पब्लिक रिलेशन जो कंपैशन कंसर्न है, ये आपके पास में आप साधारण बिजनेस में यूज करें। अब उसने कोई था, दूसरा कोई होता तो इग्नोर कर दिया होता, चलो भाई कोई आया था वो भूखा रह गया, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। बट हियर वाज अ पर्सन, उसके ऊपर दया आई, कंपैशन था। रविंद्रन मेरे रूममेट बार बार बोल रहे थे एम्पैथी एम्पैथी, एंड ही वाज एम्पैथाइजिंग विद हिम कि भाई आप आइए। हमारे को ढूंढा उन्होंने 3 दिन के अंदर में, और जब वो आया तब उसके बाद में अखबार में खबर दी गई कि ऐसा इंसिडेंट हुआ। और वो वीडियो क्लिप केम ऑन ट्विटर, सोशल मीडिया के ऊपर बर्बाद लोगों ने उसको देखा। तो ये पब्लिक रिलेशंस को हर एक चीज में, लाइफ में देखना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। Jairam Bhaiji, can I request you to give your expert guidance to all the PR people here? Please come to the dais. Good evening, everyone. Amsha. When there are all experts, there is no need of my expert comments on this. I've heard almost all in a sleeping mood, because I shut my eyes and I was listening to everyone. It was nice of them to share their views all these almost 2 hours, 2.5 hours. Nice. And nothing to say except no, we have to fight our existence now. There is a need for a total revolution. We have been there for a long time in this profession, but we could not get a space. People make use of us, but unfortunately, an engineer can show a dam built or something, but as a PR man, it is a momentary. You get everything, you make wonders, but the next moment after seeing in the paper, it's vanished. Tomorrow, if anything goes wrong, everybody will blame that PRO must be punished. But the problem faced and the work he has done for all these days is gone and within a seconds. So we must think ourselves what to do. There has to be some kind of force. We'll have to build up at least from this time onwards. I have been talking to him, Mr. Shantivan, Babji, or we all must sit together and professionally we have to fight, and we have to get some place in the government levels. We would have been there for some time and would have gone, but constructively we have not worked so far, but we'll have to do at least at this moment. That's why I request all the PR professionals, communicators, come together. Let us have a platform and fight for our existence. Otherwise, there will be no one at all. We will be there in boys always. So my request in this forum, let us go back and think what we should do, what should be done for our own existence. I'm sure that Babuji will also agree, and Reddy, Mr. Reddy, and we have our friend from PRC, Mr. Vinay Kumar, our great guy, Air India. He made a little bit of sound in Air India, and going at the true sense, he was opposing the management itself. He got that guy kind of guts to go against the. We should have that kind of courage. If you agree with everyone, where is our stand? So I was telling Madam yesterday how we used to fight for our existence in our own organization. 1 or 2 now, our metro man Anjum Dayal is in a top position.
And like that, we must get some people at the top corporate level, I mean the managerial level and board level. There we should fight. Otherwise, we'll be here, we'll be talking every day and go back. No, we must have a revolution in it. So we will call a meeting on this. We are not talking about PRSI, PRSI or all these things. We are one. I believe that. We have to have come together and discuss what is next. That is what I meant. All the best for all our PR people. Next generation we will see some managing director from the PR field and even politicians also. There are so many, from Hyderabad, I remember, I forgot his name. He was a minister for information, and in the national level. Upendra. Yeah, I met him during my PRSI days. Yeah. Well, we'll have to fight for also. That's all I can say. And again, we are having a global communication conclave on the 11th and 12th at Kolkata. We are meeting there. There we will have the accreditation program for the PR people. That Mr. Vijay Singh will be leading, and Mr. Bhargav. So I'll ask him to come and debate on that, and I'll invite all other PR societies to also come together, and let us have an agenda on this. And next time when we come to, the Abu place, we will have a very nice PR forum to fight for ourselves. Thank you so much. Sorry for taking this time of here. जय कुमार भाई जी, अभी 1 मिनट के लिए सभी साइलेंस में बैठ के फिर हमारे उपस्थित मेहमानों को गॉडली गिफ्ट दी जाएगी, ईश्वरीय स्तोत्र। वेणुगोपाल रेड्डी जी हैदराबाद, आपको सौगात